Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 18th of September 2023. From today's newspaper, we'll be discussing about the Project Cheetah and the OTT regulation. There are only two topics, so it will be very a short discussion today. Before we start our discussion, this is our channel, IAS Cafe. If you're really liking our initiative, please to subscribe it, like and share. Now, moving to the main discussion, that is the Project Cheetah. You all must have heard about the Tiger Project, project to save the Indian bustard, regarding the snow leopard. So we all can see that with respect to your GS paper 3, Environment in Science and Technology, the species portion is very important with respect to the prelims examination. Every year there are certain questions which are being asked from the species. That in which region of the India this species is found or what is its conservation status. That is the IUCN conservation status. Or as per the site. Or is it in schedule 1, 2, 3, 4 of the World Wildlife Protection Act? So we can see that yes, the species is important, and now the cheetah itself is so critical, it's so important that we as a country are trying to save the cheetah under the Project Cheetah. The reasons we'll definitely have a look further. The writer is asking certain questions that how many cheetah are there under the project currently? यानी अभी हमारा ये जो प्रोजेक्ट चीता चल रहा है उसमें हमारे पास टोटल चीता है कितनी एग्जैक्टली, राइट? Were all the cheetahs allowed to run free in the wild? देखो, जब भी हम चीता को इंट्रोड्यूस करते हैं या किसी भी एनिमल को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी दूसरी जगह से इंडिया में, तो या तो हम उनको कैप्टिव में रखते हैं, एक पर्टिकुलर आर्टिफिशियल एक जगह बना देते हैं, हम वहां रखते हैं उनको, या फिर वाइल्ड लाइफ या फिर वाइल्ड की तरफ उनको छोड़ देते हैं फॉरेस्ट के अंदर, नेशनल पार्क और वटेवर जो भी जगह यहाँ पे होती है. तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि क्या ये चीटास आर अलाउड टू रन फ्री इन द वाइल्ड एंड व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर द डेथ ऑफ द चीता. कि जब चीता को हम इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू protect cheetah, then why there is seen that the death of cheetahs are increasing? Has this project distracted the attention away from other conservation projects for the endangered species? Then writer asks one more thing that focusing too much on the project cheetah, जिसमें कोई result नहीं दिखा है for the writer, the death are increasing of cheetah, क्या बाकी के जो conservation project है जैसे कि snow leopard हो गया, the to conserve the Indian bustard or the tiger or the elephant, क्या हमारा फोकस इन सब से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है प्रोजेक्ट चीता की वजह से? The first batch of 8 cheetah from the Namibia arrived on 17 September 2022. अब थोड़ा सा डेटा में ये बात कर रहा है कि 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीता का पहला जो बैच है वो यहाँ पे आ रहा है. नामीबिया इज अ कंट्री इन, is it in Africa or somewhere else? World map, please do it, it is important. So the first batch of 8 cheetahs from Namibia arrived on September 17, 2022, officially launching the Project Cheetah, India's Cheetah Introduction Program. तो प्रोजेक्ट चीता है क्या? प्रोजेक्ट चीता का मतलब है कि हम बाहर से इंडिया के अंदर चीता को इंट्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे चीता का पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट है, राइट, या फिर एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम चीता को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ऑफिशियली 17 सितंबर 2022 को हमने नामीबिया से 8 चीता का जो बैच है, पहला बैच जो है बुलाया था, और यहीं से ऑफिशियली हमारी प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हो जाती.
अब जब 17 सितंबर 2022 से लेके अगर हम 18 कल की बात करते हैं तो पूरा इसको 1 साल हो जाता है, तो इसका जो ओवरव्यू है प्रोजेक्ट का वो हम यहाँ पे देखते हैं that क्या ये सक्सेसफुल है और what can be the changes or any other thing which we can observe will be discussing. The goal of the introduction of the African cheetah is to establish viable cheetah metapopulation in India that allows the cheetah to perform its functional role as a top predator and provides the space for the expansion of cheetah within its historical range, thereby contributing towards global conservation efforts. एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी हम बात करते हैं फूड चेन या फूड वेब की, तो सबसे ऊपर आपके पास चीता होता है जो कि टॉप प्रेडेटर्स में होता है, उसके नीचे फिर आपको बाकी जानवर मिल जाएंगे, हिरन मिल जाएगा, फिर नीचे डॉग मिल जाएगा, फिर कैट मिल जाएंगे, फिर छोटे मोटे इस तरह से जो चेन चलती है। तो चीता आपके टॉप प्रेडेटर्स पे आता है। चीता अगर टॉप प्रेडेटर्स पे है, अगर उसकी पॉपुलेशन खत्म हो गई, यानी चीता जिन पे अटैक करता था, चीता जिस पॉपुलेशन को खाता था, मार के खाता था, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही होगी, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही होगी, तो एक तरह से ये पूरा जो बैलेंस है या फिर जो फूड वैप है, फूड चेन आप बोल सकते हो, उसकी पूरी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है, एनवायरमेंटल पूरा डिसबैलेंस हो रहा है। एक ये रीजन है कि हमको चीता को बचाना है। दूसरा, हिस्टोरिकल प्लेस इसकी यही थी इंडिया, तो यहाँ पे हम उनको फिर से रीइंट्रोड्यूस करें। So this effectively means that the project aims to enable cheetahs to establish themselves as viable and free-ranging population in large unfenced wildlife reserves, which are in turn connected by wildlife corridors to other unfenced reserves. अब प्रोजेक्ट्स जो है इसका स्टेटस देखते हैं। टोटल 20 एडल्ट अफ्रीकन चीता जो है हमने अभी तक लेके आए। पहला बैच क्या था, आपके पास 8 चीता था। तो आफ्टर द फर्स्ट बैच ऑफ 8 चीता, अगर पूरे एक साल में बात करें, टोटल 20 चीता अभी तक हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला बैच आपके पास 8 चीता था और बाद में अपने 12 चीता और लेके आए। तो बाद में मार्च 2023 में one of the female gave birth to a litter of 4 cubs which were conceived in India. जो 20 चीता का आपके पास जो बैच आप इंडिया में लेके आए, उसमें से एक जो फीमेल थी, उन्होंने 4 कप्स को बर्थ दिया और बहुत टाइम तक उनको जब क्वारंटीन में रखा, जो कि 50 से 70 दिनों का था, उसके बाद चीता को रिलीज किया क्वारंटीन से and closer to large holding enclosure so that they could acclimatize themselves to the local habitat and environmental conditions. The plan देखो ये भी होता है ना कि अगर आप अफ्रीका से इंडिया में किसी एनिमल को लेके आ रहे हो, तो दे आर अडॉप्टेड टू दैट जियोग्राफिकल लोकेशन, वहां का टेम्परेचर, वहां का रेनफॉल पैटर्न, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है और इंडिया का पूरा अलग है। तो जब आप कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हो, पहले कुछ टाइम तक आप उसको क्वारंटीन में रखते हो, एंड व्हेन इट इज सेफ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इट कैन सर्वाइव, तब आप उसको थोड़ा सा बाहर के एक्सटर्नल एनवायरमेंट में भेजते हो टू अडेप्ट फॉर द लोकल हैबिटेट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। तो प्लान क्या था? That was to first release the male coalitions after about 1 to 2 months of them getting acclimatized in the larger enclosure. तो पहले ये प्लान था कि जो मेल चीता है उनको इंट्रोड्यूस करेंगे और बाद में जो फीमेल है हम उनको वहां पे रिलीज करेंगे। So the release of cheetah to run free in the wild was delayed, with the first cheetah being released after more than 100 days in the larger enclosure. So far, 12 of the 20 cheetah were ever released in the world. यानी अभी तक सोचिए 20 चीता आपने इंट्रोड्यूस किए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 12 जो है उसको आपने वाइल्ड खुले जंगल जैसे एरिया में उसको आपने रिलीज किया है, विद अ फ्यू ब्रॉट बैक मल्टीपल टाइम्स टू द कूनो नेशनल पार्क। और उन 12 में से भी बहुत कुछ नंबर ऐसे जिसको आपने वापस कूनो नेशनल पार्क जो है, जो कि कहाँ पे है, वेल एमपी, वहां पे आप इसको लेके आ गए, क्योंकि जो मैनेजर्स है वहां के, उनको ये लगा दैट कैट्स वर मूविंग इनटू एरियाज दैट मे हैव पोस्ट रिस्क फॉर दिस सर्वाइवल, कि ये जो चीता है वो ऐसे एरिया की तरफ जा रहे थे कि जहां उनके सर्वाइवल को
खतरा हो सकता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो हैबिटेट कंडीशन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। सिक्स ऑफ द चीता जो कि अफ्रीका से आए थे उनकी डेथ हो चुकी है, 4 जो है अभी भी कैप्टिविटी में है और 2 जो है वाइल्ड में। हाउ बैड दिस डेटा इज दैट 6 डाइड, 4 ऐसे जिसको अभी तक रिलीज नहीं किया, दे स्टिल इन द कैप्टिविटी, एंड 4 ऑफ द एडल्ट चीतास आर येट टू बी रिलीज्ड टू रन फ्री इवन फॉर अ सिंगल डे। तो एडिशनली जो 4 कप थे जिन्होंने फीमेल चीता ने इसको बर्थ दिया था, आउट ऑफ दैट 3 ऑफ द 4 कप हैव डाइड, उसमें से 3 कप्स की डेथ हो चुकी है, एंड ओनली द रिमेनिंग कप इज बीइंग हैंड रियर्ड एज इट्स मदर हैज रिजेक्टेड इट। Since the death of sea cheetah in July-August, all the 10 of the remaining sea cheetah have been captured and kept captive in enclosures for observation, removal of radio collars and treatment. Self-capturing these cheetahs, especially a female, whose radio collar was functioning only intermittently, no small feat and effort, self-determination dedication by the field team has to be appreciated. तो बेसिकली एक तरह से पूरा ऑब्जर्वेशन है इस प्रोजेक्ट का कि नंबर ऑफ डेथ इन्होंने बताया है, और ये जो बता रहे हैं कि हमने वो रेडियो कॉलर टेक्निक इनकी जो गर्दन पे बांध दिया जाता है उसके थ्रू हमने ये सब कैप्चर किया होता है। करंटली जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन देखें तो द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट चीता जितने भी सर्वाइविंग 14 एडल्ट है और 1 कब है वो अभी कैप्टिविटी में है, एंड देयर इज द टॉक ऑफ देम बीइंग रेडियो कॉलर अगेन, और उनको फिर से रिलीज किया जाए। So the project authorities are talking of additional sites जैसे कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश। गांधी सागर जो है एंड ऑफ दिस ईयर रेडी हो जाएगा और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के अभी भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट्स बीन 1 year. We are still not able to release them properly out of the captivity, and the death of the cheetah is also seen. That means कहीं ना कहीं ये फेलियर को शो कर रहा है। Why did cheetah die? There have been a variety of reasons and the causes attributed to the death of 6 adult and 3 cubs. अब ये इम्पोर्टेंट है जानना कि अगर किसी चीता की डेथ हुई है तो रीजन क्या है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक, यूजुअली कुछ जो मॉडर्न लोग हैं वो रेडियो कॉलर को ब्लेम करते हैं कि आप ये इनकी गर्दन पे जो पट्टा बांधते हो तो इसकी वजह से when they move their body they get scratched, then the bleeding, then infection. Okay, so this is how they blame it. But the reality, as per the writer, says that the radio collars are not only the underlying reason for the death. At least that is the officially stated position. One needs to determine that African cheetahs are susceptible to the certain insects and parasites in India, and if the collars provide a micro-conductive for these parasites. तो राइटर क्या बोलता है कि ये बहुत ही अंडरलाइन रीजन नहीं है कि अगर कुछ कह रहे कि रेडियो कॉलर की वजह से उनको इन्फेक्शन वगैरह हो गया होगा, तो अफ्रीकन चीता इन सबके लिए ससेप्टेबल है, दे आर रेजिस्टेंट, दे आर ससेप्टेबल टू सर्टेन इंसेक्ट, सर्टेन पैरासाइट्स, so this could not be the only reason for that. The first cheetah which died is said to have perished due to a renal condition. तो जो फर्स्ट चीता था जिसकी डेथ हुई थी वो रीनल यानी कि किडनी से कुछ प्रॉब्लम था उसका, उसकी वजह से ये डेथ हुई। The question that arises is why the government of India agreed to bring the cheetah which was sick and put it through more stress by transporting it. ना क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा चीता जिसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, the cheetah was sick, उस चीता को यहाँ लाके उसको और स्ट्रेसफुल कंडीशन में डालने की क्या जरूरत थी। One of the female died when authorities attempted to get the cheetah to mate inside the enclosure. 3 of the 4 cubs born in India are reported to have died due to heat wave condition. यहाँ पे heat waves होती हैं, which raises more questions that if they were born in March 2023, that means the mating took place in India in captivity. Why then was there a rush to mate the cheetah in captivity when it could occur naturally in a free-ranging environment after the release as prescribed in the action plan? So one of the male is reported to have died due to cardiopulmonary failure, but what caused it has been not determined. The last big death occurred during the monsoon. So while there have been several conflicting reports कि या तो हीट वेव की वजह से डेथ हो रही है, रेडियो कॉलर की वजह से हो रही है, मॉनसून में हो रही है, so there are multiple factors. Even though the cheetah were under constant monitoring, फिर भी जो 9 चीता उनकी डेथ हो गई।
तो यहाँ पे the writer is saying that it is the time the authority reassess the approach and act decisively so that one can prevent such death, especially when the animals are in captivity. We also have to be cognizant of the effect of long period of captivity. आप इतने टाइम तक जब आप उनको कैप्टिविटी में रख रहे हो तो उसके ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स होते हैं. चीता और कैट जो है वो एक तरह से कैट की तरह घर में रखने के लिए दे आर नॉट अडॉप्टेड. व्हाट इज मॉर्टेलिटी इज एक्सपेक्टेड. क्या पहले से एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ये डेथ हो सकती है. The mortalities in captivity were not anticipated nor planned for. Similarly, the death of sea cow during the summer and pre-adult monsoon वो भी expected नहीं था. So while conducting the population habitat viability assessment, the mortality rates of 15% for adults, 50 or 60 and 70% for cubs were used. However, now the project authorities are quoting higher values that mortalities that have been occurred. So what has been the impact of the project on the conservation of the endangered species? ये जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है हमने ऑफिशियली कि चीता को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट जो है endangered species पे क्या पड़ता है या फिर क्या पड़ा है. Unfortunately, the very high-profile cheetah project has definitely distracted attention and probably also diverted financial resources from much-needed conservation projects like the one of the Great Indian Bastard, जैसे कि हमने बताया आपको, transportation of Asiatic lion, इन सब से हमारा बहुत ज्यादा distraction जो है हो चुका है. तो यहाँ से आपको what lesson you learn that without a proper and adequate habitat there is no point in importing more cheetah. यानी अगर आपके पास adequate habitat ready नहीं है तो और ज्यादा cheetah introduce करने का कोई मतलब नहीं. They'll die. Creating a more glorified safari park won't solve the issue. The real strategy lies in the learning from the past mistakes and focusing on establishment of high quality habitat covering at least 5,000 square kilometers before bringing more cheetahs. So we cannot rely on simply importing more cheetah to establish a viable population. So this you definitely needs to improve it. So coming to the second topic that is about the OTT service regulation. ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. When we talk about the OTT platforms, usually what comes in our mind is the Netflix, the Amazon Prime, these things. But see, हुआ क्या है? Telecom Regulatory Authority of India, that is the TRAI, उन्होंने यानी कि इस कंपनी ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने they have invited a response to a consultation paper it released on a regulatory mechanism for over the OTT communication services. तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे पूरी डिस्कशन में OTT में जो कम्युनिकेशन सर्विसेज है उसके बारे में हम बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप. तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है बनाया है या फिर इसके लिए अपील की है फॉर द ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विस और उसके लिए कंसल्टेशन पेपर जो है उसको इनवाइट किया. और यहाँ पे इस पेपर में उन्होंने बोला कि इन सर्विसेज में सिलेक्टिव बैनिंग होनी चाहिए. Since most stakeholders have submitted the responses to the regulatory body, देखो मैं बताती हूँ इन शॉर्ट, जो आपके पास टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, they put too much of money, they put too much of efforts, the पैसा डालते हैं, सब कुछ डालते हैं to put that optical fiber things या फिर काफी चीजें जो इन्वेस्टमेंट में करते हैं उनको फिर टैक्स देना पड़ता है, फलाना फलाना लंबा प्रोसेस है. बट ये जो ओटीटी सर्विसेज वाले प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि आपके पास व्हाट्सएप है, मेटा है, गूगल मीट है, जूम है, they don't put any money. They're already using the platform of these optical fibers, right? But जनता ज्यादा यूज इनको कर रही है, उनको सिर्फ बेनिफिट हो रहा है. I mean, they're not putting out the money, but they are getting benefit out of it. Right? For example, internet is free, so people prefer to have an internet call, like WhatsApp call किया, video call कर लिया, right? There was a different time when we used to call and हमारे पास बैलेंस नहीं होता था, 1 मिनट का इतना पैसा लगता था. If you go to the different state, तो जो रोमिंग लगता था उसमें, राइट, तो दैट उससे उनका इनकम होता था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का. बट नाउ इट इज नॉट दैट.
तो इस बारे में ये पूरा जो डिस्कशन है वो बताया गया है that the discussion of the selective banning of the OTT service came after a parliamentary standing committee issued a notice to the Department of Telecom to explore this option due to unrest caused by these platforms. तो कौन कौन सा यहाँ पे व्हाट्सएप सिग्नल मेटा ये सब है. कंटेंट रेगुलेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट. हम यहाँ पे कंटेंट रेगुलेशन जो पूरा एक अलग मुद्दा है उस पर बात नहीं कर रहे हैं कि इस पे न्यूड फोटो आ रही है या फिर मिस यूज हो रहा है. नो, यहाँ पे जो बात हो रही है वो कुछ अलग हो रही है. दैट इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग. द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी has also asked state holders to define the OTT and proposal on caste sharing mechanism between the telecom service providers and OTT service. तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट ये जो ओटीटीज है इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए, इनको चार्ज किया जाना चाहिए बिकॉज द यूज इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बिल्ड कर रहे हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो इनके थ्रू बिल्ड अप, राइट. तो ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज हैव लेड टू द इरोशन ऑफ रेवेन्यू फॉर द टेलीकॉम जो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से पूरा आपके पास यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है. तो डिमांड क्या है? There should be a policy framework ताकि एक fair, equitable share contribution हो from the OTT service providers as well, and no one gets, you know, the the only benefit without putting any efforts, right? So this is only about this. आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, right? So this is it for today. Thank you so much. Please do subscribe the channel. I will get it.